you can prove by multiple modes. If you remember long ago, Dr. Mashelkar had said that in case of synthetic medicines, we need to move from mouse to man. But in case of traditional medicine, we need to move from man to mouse. Now, this is an important thing. Man to mouse means clinical efficacy is already established by thousands of years. Now, what you need to do? You need to bring some certain elements of science. Why? Because thousands of years have passed, weather has changed, soil has changed, the character of lot of plants might also have changed. Therefore, you need to have some kind of evidence of efficacy. Yes, this is the same product. So, how these evidences can be generated, what you are asking, proof of efficacy, it can be generated, you rightly said, clinical trials. Now, clinical trials itself is a huge subject. Second, you can do by in vivo, animal studies. Third, we can do now very popular bioassays, which are cell-based assays, which are enzymatic assays. Like if you prove that the product is working on the, is able to reduce, is working on the, say, acetylcholine esterase, esterase inhibition, it will be certainly increasing the memory, right? So like that, there are so many bioassays now. We ourselves are having almost 30 bioassays in our lab, which we are using day in and day out for different purposes. However, no method is absolute. So, but do we need absolute method in case of Ayurveda? Probably no, because tradition already had established. So if you look at the difference between proof of concept and this proof of efficacy and clinical trial. So clinical trial can be double-blind, placebo-controlled clinical trial, single-blind, observational study, even single case study. You rightly said phase 4 clinical trials. Phase 1 तो करते नहीं है. Phase 2 is there, phase 3 is there, phase 4 is there, and case studies are there. But when you say regulatory requirement at one place, I remember somewhere they earlier said that a study should be done not less than 20 patients. I think initially Rule 58 somewhere said a study should be done in not less than 20 patients. Now, what was the reason for 20 patients? Was probably that this is the minimum number required to find a statistical difference in the efficacy in two groups. That was the probably reason. And Professor S.D. Seth, who was the head of pharmacology at All India Institute of Medical Sciences long ago, he was the chairman of scientific committee of CCRS. I was member at that time. So it was first Dr. Seth who proposed that why do you need clinical trials? If you need clinical trials, why not start from minimum number? And that minimum number was 20 patients at that time. A lot of people might not even be knowing about this story of 20 patients, from where the 20 patient data came. But you rightly said, small industries cannot afford the clinical trials. If we say the more in the strict terms, going by even by GCP guidelines, be it GCP guideline issued by CCRS, be it the GCP guideline what we know today. So let me say with you, we are conducting a clinical trial with Indian Council of Medical Research. Means ICMR is conducting. We are just participating by providing some drug. Budget is almost 3 crore rupees. Number of patients is 5,000. Budget is 3 crore rupees. So from where this kind of money will come? You rightly said, in Ayurvedic industry can't afford such a huge expenditure. But still, for the purpose of license, we need to generate some kind of data on efficacy. And as I told you, suppose you say phase 4 clinical trial, Dr. Pawan, but even for phase 4, first condition is you should have a product manufacturing license. Without that, you cannot conduct phase 4. But if you already have got the product manufacturing license, then why clinical trial?
Okay, so yes sir, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, वही वाली बात है. Right. So I think it's really very pertinent, and would have been nice if you could have invited Dr. Kaustubh Upadhyay, the new advisor in the Ministry of Ayush. He's a very progressive person, and he is the now head of regulations of this, all these kinds of issues. And I would have loved that he could have listened to today's discourses, whatever we are going to have. With this short introduction, maybe I am very thankful to you for giving me opportunity to share some of my views in very brief. The title is very big, and I would not like to take too much time of your and the audience. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. This SSI of Ayurveda is unable to afford maximum clinical trials. They are not interested because they are selling in very mini quantity, 1 crore turnover, 2 crore turnover. So they are not ready to afford that clinical research. They are asking clinical research from 20,000, 30,000, 5,000. Means I am really shocked to what is the SSI. Big companies are definitely like Dabur Vedar, Jandu, Himalaya. They are doing very well. Like a small percentage of small scale industry is much more than the standard manufacturers. That is very clear thing. So I am going to convince manufacturers, because here manufacturers are also there in, I am in Indore at present. आज अष्टांग एलईडी थी, तो उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ. इसीलिए मैं बिना समय नष्ट किए अपने प्रथम वक्ता डॉक्टर राजीव कोरेले जी को आमंत्रित करता हूँ. डॉक्टर राजीव कोरेले जी, आयुष जोन, यस वेलकम. सर, आप सभी को प्रणाम, मेरे वरिष्ठ गुरुजनों को. बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने बहुत ही इस विषय के जानकार पूरे देश ही नहीं विदेशों में अपने ज्ञान की जो है गंगा बहाने वाले हमारे प्रोफेसर सीके कटियार सर को आपने इनवाइट करा. सर हमारे मेंटोर भी हैं और हमारे चाचा जी के रूममेट भी रहे हैं और ऋषिकुल में पढ़े हुए हमारे ओल्ड एनुनाई भी हैं. तो सर का मैं स्वागत करता हूँ आयुष समृद्धि की तरफ से. सर ने सही करा कि जब ये सब प्रूफ ऑफ एफिकेसी फॉर व्हाट, तो मैं सर पहले प्रेजेंटेशन के साथ ही फिर अपनी बात शुरू करता हूँ. इसको मैं शेयर करता हूँ. एक मिनट सर होल्ड करिए जस्ट. स्क्रीन आ गई है सर? इट्स क्लियर एंड विजिबल. आ गई. प्रेजेंटेशन मोड कर दिया, स्लाइड्स से. ओके, फुल साइज कर दिया. Yes. हाँ, slides. This is PowerPoint. You can go for slides. Yes. Excellent. फुल स्लाइड्स शो करेंगे तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी. ठीक है, काइंडली कंटिन्यू. ओके सर जस्ट आई वांट. Yes, continue. We are seeing the screen. Don't worry. आज हम चर्चा करेंगे प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर एएसयू ड्रग. ए फॉर आयुर्वेदा, एस फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, यू फॉर यूनानी. औषधि जो सबको अमृत तुल्य गुण दे, औषधि जो सबको जीवन दे, औषधि जो रोगों से बचाए, औषधि जो हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाए, सारी समस्याओं को निवारण करे, चाहे वो बीमारियों से बचाने की शक्ति हो या रोग हो जाए तो रोग से निवारण की शक्ति. वो सारी की सारी शक्तियां जो है औषधि में समाहित है. उसो नाम रसा. ये भगवान धन्वंतरी का जो आयुर्वेद अवतरित जो करा गया है वो औषधियों के कारण ही अमृत है. अगर औषधियां ना हो तो हम शिक्षा के द्वारा भी यद्यपि रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें औषधि की कहीं ना कहीं आवश्यकता है. अपने गुरुदेव सीबी जहां साहब को मैं प्रणाम करता हूं. तो आज हम चर्चा करेंगे प्रूफ ऑफ एफिकेसी पर. तो ये ड्रग डिस्कवरी का एक बेसिक सिस्टम है कि कोई भी ड्रग जो है डिस्कवरी होती है उसके लिए पहले हमारे पास
कोई ना कोई तथ्य होते हैं, कोई ना कोई हमारे पास नॉलेज होता है, कोई ना कोई हमारी विजडम होती है। उस विजडम के आधार पर हम अपने प्रोडक्ट को प्लान करते हैं। कई बार जो है हमारी विजडम हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई है, उसके आधार पर भी हम औषधियों को बनाते हैं। लेकिन जब हम ड्रग डिस्कवरी करते हैं, नया कोई इन्वेंशन करते हैं, नया कोई एप्लीकेशन सोचते हैं, तो उसके लिए हम अपने सिद्धांतों के आधार पर हम ड्रग का डिजाइन करने के लिए, चूंकि हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो वर्णित है शेड्यूल फर्स्ट, जिसमें कि 57 बुक्स अभी वर्णित हैं, उन बुक्स में जो भी फॉर्मुलेशन दिए गए हैं, तो वो सारे के सारे हमारे रूल 158 बी के अंतर्गत 3H के अंतर्गत आते हैं, 3A के अंतर्गत। तो इनके द्वारा जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन कहलाते हैं, शास्त्रीय योग कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो शेड्यूल फर्स्ट में जो घटक दिए गए हैं, उन घटकों के आधार पर कोई भी अगर फॉर्मुलेशन हम सोचते हैं, तो वो हमारे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। वो अगर हम पेटेंट करा लें तो पेटेंट भी बन जाते हैं। तो उन पेटेंट को बनाने के लिए बेसिक प्रोसीजर है कि हम उनके रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करें, उनके एक्सट्रैक्शन करें, या उनके जो हम फ्रैक्शन को यूज करें, और उनके फ्रैक्शन को यूज करने से पहले उसकी एफिकेसी को हम सर्टिफाई करें। सर्टिफाई करने के लिए हम प्री क्लिनिकल स्टडी कर सकते हैं, क्लिनिकल स्टडी कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। उसके आधार पर जब हम एक स्टैंडर्डाइज्ड रॉ मटेरियल को खोज लेते हैं, फिर हम फॉर्मुलेशन एफएनडी के माध्यम से उसके डोजेज फॉर्म को और स्टेबिलिटी को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, स्थापित करते हैं, और उसको जो है फोटो इमेजिंग के द्वारा, उसकी जो है टीएलसी के द्वारा, उसकी केमिकल स्ट्रक्चरिंग के द्वारा, उसके जो है हमारे फिजिको केमिकल करेक्टराइजेशन के द्वारा हम उसके ड्रग की क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जो है स्थापित करते हैं। और फिर हम फर्दर इतने पर ही नहीं रुकते हैं, फिर हम एक टॉक्सिसिटी स्टडी पर भी हम जो है हिस्टोपैथोलॉजिकली उसकी सेफ्टी एफिकेसी को प्रूव करते हैं। और प्रूव करने के बाद अब हमारी दवाई क्लिनिकल रिसर्च के लिए प्री रिक्विजिट, मतलब जो भी रिक्विजिट थी वो सब पूरी हो जाती है, एक तैयार हो जाती है। अब हम फेज स्टडी में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रवेश करने के लिए अभी कैसे क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, कैसे फेज 1 से फेज 2, फेज 2 से फेज 3, फेज 4 में जाते हैं, और इनका क्या इम्पैक्ट है, और आयुर्वेदिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसकी क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा करी जाएगी। तो एक दिस इज द प्रोडक्ट बेसिक जनरल साइकिल टू अवेयर basic knowledge of the drug development. These are the basic clinical trial steps for proof of efficacy. दो टर्म आते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एंड प्रूफ ऑफ एफिकेसी। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हम ड्रग डेवलपमेंट की फेज में करते हैं, इनिशियल लेवल पे करते हैं, जब हमारा ड्रग जो है फेज फर्स्ट ट्रायल में, प्री क्लिनिकल और फेज फर्स्ट के बीच की अवस्था में होता है। जब हम जो है एफिकेसी को फेज फर्स्ट, फेज 2 के द्वारा सर्टिफाई कर लेते हैं, तब हमारा प्रूफ ऑफ एफिकेसी की फेज में आता है। इसके बेसिक स्टेप यही है जो मैंने बताया, स्टडी का डिजाइन, कि हमने किस पर्पस से चाहिए, किस इंडिकेशन से चाहिए, किस कॉज से चाहिए, उसका जो है एनडीए, क्लिनिकल प्रोटोकॉल, इथिकल अप्रूवल बाय इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, CTRI रजिस्ट्रेशन, इट इज मस्ट फॉर ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स। इसके बिना आपका ट्रायल कोई वैल्यू नहीं, उसकी सिर्फ पेपर का टुकड़ा है। और ये सब हम लोगों के लिए फ्यूचर की जरूरतें हैं। ड्रग प्रिपरेशन, ट्रायल रजिस्टर्ड करने के बाद हम एक ड्रग को एक स्टैंडर्ड SOP से, स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हैं, और फिर उसको जो है हम, जो भी हमारे आउटकम्स आते हैं, उनको हम पेटेंटिंग के लिए फाइल करते हैं, लाइसेंसिंग के लिए फाइल करते हैं। आयुर्वेद में तो क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए अभी सच कोई अभी बहुत ज्यादा SOP अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मॉडर्न में अगर कोई दवाई ट्रायल के लिए भी बनानी है, तो उसके लिए भी एक इनिशियल लाइसेंस लेना पड़ता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है उसके हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में मल्टी सेंट्रिक और सिंगल सेंट्रिक जैसे भी डिजाइन हो उसके हिसाब से कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। इसके आधार पर हम जो है एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू, डिस्कशन, स्टैटिक्स, और इसके आधार पर हम एक
निष्कर्ष निकालते हैं, एक रिजल्ट बनाते हैं, और इस रिजल्ट के जो आउटकम है जब पब्लिश हो जाते हैं और इनके आधार पर पेटेंट और रेगुलेटरी अफेयर्स की जब हम रिक्वायरमेंट मीट कर जाते हैं तो प्रोडक्ट जो है हमारे मार्केट में आते हैं, और फिर मार्केट में इनकी हम फार्माको विजिलेंस के द्वारा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। कोई भी साइंस, कोई भी सिस्टम बिना किसी 3P, जो हमारे अभी कल दीक्षांत समारोह में गवर्नर साहब आए, उन्होंने बताया कि कोई भी सिस्टम, कोई भी साइंस 3 चीजों पर आधारित होती है जिसमें अगर उन्नति चाहते हैं आप। पहला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका क्वालिटी, एफिकेसी और सेफ्टी को पूर्ण करता हो, सारी रिक्वायरमेंट को मीट करता हो। पेटेंट, और जो प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको पेटेंट करा सकें, प्रोडक्ट ऐसा हो जो नोवेल हो, प्रोडक्ट ऐसा हो जो जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, प्रोडक्ट ऐसा हो जो हमारी सारी जरूरतों को पूर्ण करता हो। तो ऐसा 100% सर्टिफाइड अगर प्रोडक्ट पेटेंट के लायक है, तभी हमारे रिसर्च का, तभी हमारे नए कार्य का फायदा है। और लास्ट P बताया उन्होंने, पब्लिकेशन। और कोई भी चीज जब नोवेल होती है और पब्लिश हो जाती है तो उसकी वैलिडिटी स्वतः हो जाती है। हमारे पुराने जमाने में कहा गया, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता आप्त वचनम आप्त श्रुति। जो आप्त लोग हैं उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है आप्त क्या होते थे, सत्य में रहते थे, रजतम से परे होते थे, इसलिए उनके बातों में कोई स्वार्थ नहीं होता था, कोई बिजनेस नहीं होता था, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं होता था। तो इसलिए उस जमाने में प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और उस जमाने में जो हमारी क्लिनिकल ट्रायल की पद्धति थी वो क्या थी, रोग परीक्षा बाई निदान पंचक, और जिसमें रूप, पूर्व रूप, उपसय, संप्राप्ति आदि का वर्णन होता था। निदान, रूप, पूर्व रूप, उपसय, संप्राप्ति का वर्णन होता है। और रोगी परीक्षा, रोगी परीक्षा 3 प्रकार से, और षड्विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, 10विध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा में योग रत्नाकर ने बताया, रोगाक्रांत शरीरस्थ स्थानमस्तो परीक्षित नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दीर्घाकृति। अब क्वेश्चन ये आता है, क्लिनिकल ट्रायल्स हमें क्यों चाहिए, ये प्रूफ ऑफ एफिकेसी की आवश्यकता क्या है। अभी लास्ट में मैं आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और आयुर्वेदिक लाइसेंसिंग के सिस्टम को बताऊंगा कि उसमें किस प्रोडक्ट के लिए, किस एक्सट्रैक्ट के लिए, किस डोजेज फॉर्म के लिए कब कब क्या क्या चेंज होते हैं, तो कौन कौन से एफिकेसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगा। तो क्लिनिकल ट्रायल जो है हम कराते हैं एफिकेसी को प्रूव करने के लिए, किसी की ड्रग की सेफ्टी को असेसमेंट के लिए। हम नए ड्रग को डेवलप करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता होती है। कोई भी जब न्यू डिलीवरी सिस्टम, नई डोजेज फॉर्म जब हम खोजते हैं तब भी हमें क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए होते हैं। जब हम किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं तब भी हमें उसके क्लिनिकल ट्रायल्स की आवश्यकता होती है। कोई हमारा पुराना लिटरेचर है उसको वैलिडेट करना हो, कोई हमारी फंडामेंटल रिसर्च करनी हो, कोई नए अप्लाइड रिसर्च, न्यू इंडिकेशन सर्च करने हो, तो हर जगह जो है क्लिनिकल रिसर्च की आवश्यकता होती है। एक और आवश्यकता है टू गेट लाइसेंस, जैसा कि हमारे कटियार साहब ने बताया कि लाइसेंस लेना है तो क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है, प्रोटो स्टडी की जरूरत है, और अगर मिल गया तो फिर क्या जरूरत है। तो दीज आर द बेसिक न्यू रिक्वायरमेंट, न्यू prerequisite for taking or granting license. So clinical research का, these are the basic SOP, basic guideline for drug development as per आयुर्वेदिक सिस्टम। तो ये गाइडलाइन जो है भारत सरकार ने जारी करी, इसमें वही है कि आपको फेज फर्स्ट में जाना है। फेज फर्स्ट के लिए प्रिपरेटरी फेज है और ड्रग डेवलपमेंट का फेज है। प्रिपरेटरी में आप जो है सर्वे करते हैं, फॉर्मुलेशन जो हमने पहले आपको बताया, उसी आधार पर लिटरेचर सर्वे के द्वारा हम जो है इंग्रेडिएंट को सिलेक्ट करते हैं, स्क्रीन करते हैं, उसके आधार पर हम जो है फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं। फॉर्मुलेशन डिजाइन करके हम उसको बनाते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं, उसको प्री क्लिनिकल सेफ्टी स्टडी के द्वारा और एनिमल स्टडी के द्वारा उसकी हम जो एक प्री क्लिनिकल डोजियर तैयार कर लेते हैं। उस डोजियर के आधार पर हम क्लिनिकल रिसर्च के प्रोटोकॉल्स बनाते हैं और एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन हम क्वालिटी एश्योर करके क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करते हैं, और उसके आधार पर जो भी रिजल्ट निकलते हैं उसको हम जो है
पब्लिश करते हैं। और इस क्लिनिकल ट्रायल से पहले हमें आईईसी और आईआरबी से हमें अप्रूवल लेना होता है। उस अप्रूवल के बाद हमें सीटीआरआई में रजिस्ट्रेशन होता है और उसके आधार पर हम डाटा का एनालिसिस कराते हैं। तो नाउ कम ऑन दी क्लिनिकल रिसर्च डेफिनेशन। अब ये सारा समझना इसलिए जरूर है क्योंकि proof of efficacy without clinical trial cannot be possible. So we have to understand what clinical research. Now come on the definition. Clinical research is a component of medical and health research intended to produce knowledge valuable for understand disease, preventing and treating illness and promoting health. ये यूएस नेशन की तरफ से जो रिसर्च सबमिट हुआ उसमें एक रिसर्च की एक कॉमन डेफिनेशन फाइंड आउट की गई, एस्टेब्लिश की गई। WHO ने रिसर्च का डेफिनेशन दिया, प्रोस्पेक्टिवली असाइंड ह्यूमन participant to one or more health related intervention to evaluate the effect on the health outcome. So these are the basic definition for clinical research. क्लिनिकल रिसर्च की जितनी भी डेफिनेशन है वो पेटेंट ओरिएंटेड है, एपिडेमियोलॉजिकल, बिहेवियरल, आउटकम और हेल्थ सर्विस रिलेटेड है। और एनएचआई इनको 3 भागों में डिवाइड करता है, पेटेंट के लिए, कॉज के लिए और नए इन उसके खोजने के लिए। क्लिनिकल रिसर्च के लिए जो बेसिक चीजें हैं हमारी, वो मेंस, उसके लिए टेक्निकल स्किल चाहिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए। आज ये सबसे बड़ा एक समस्या है कि जिनको आयुर्वेद का नॉलेज है उनको जो है मॉडर्न प्रोसीजर का बहुत ज्यादा एक सभी के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक आवश्यकता है इस बात की कि टेक्निकल और साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ जो है आयुर्वेद को समझने वाले लोग आज कम हैं। और हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं तो अगर वो आयुर्वेद को बहुत अच्छे समझते हैं तो साइंटिफिक प्रोसीजर, जितने जो क्लिनिकल रिसर्च और जो साइंटिफिक ट्रायल्स किए जाते हैं, जिस तरीके से उसमें डाटा एवोल्यूशन, जितनी स्टैटिक्स टूल्स और नए जो है डायमेंशन जुड़ते जा रहे हैं, तो उसके साथ अपडेट स्किल वाले लोगों की बहुत कमी है। आज हमारे पास जो है 7.5 से ज्यादा लाख से ज्यादा आयुष ग्रेजुएट हैं। वी नीड टू अपग्रेड देयर टेक्निकल स्किल बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक बैकग्राउंड। आयुर्वेदिक स्किल है, आयुर्वेदिक सोच है, लेकिन उसको वर्तमान समय के हिसाब से एक अपडेट की आवश्यकता है। हमारे मटेरियल्स में हमारे रिसर्च प्रोटोकॉल्स, हमारे रिसर्च इनपुट, जितना सेकेंडरी लिटरेचर जो भी हमारे पास है, उन सब के लिए हमारी थर्ड आवश्यकता है क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल इक्विपमेंट, मेथड, स्टडी डिजाइन, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, इथिकल अप्रूवल, सीटीआरआई रजिस्ट्रेशन, जीसीपी गाइडलाइन, इन सब के द्वारा हमें एक मेथड, एक हमें विजन दिया गया। उस विजन के आधार पर हम एक अच्छा स्पॉन्सर ढूंढते हैं और उस स्पॉन्सर के धन और उसके धनराशि से जो है सारे ट्रायल कंडक्ट कराए जाते हैं। और चाहे हम स्वयं करें या सीआरओ को कराएं या पैथोलॉजी करें या कोई हिस्टोलॉजी करें या कोई उसका किसी भी तरीके से अगर कुछ भी करें, तो हर जगह एक रिसोर्स की आवश्यकता होती है और इस कार्य में बहुत अधिक धन लगता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज ट्रायल कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ा एक कार्य हो गया है। अगर ओवरऑल बात करें तो रिसर्च प्राइमरी सेकेंडरी तरीके से बांटी जाती है। प्राइमरी रिसर्च जो है क्लिनिकल अगर एस्पेक्ट में बात करें तो बेसिक रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, और सेकेंडरी मेटा एनालिसिस और रिव्यू। क्लिनिकल रिसर्च को फिर हमने 2 भागों में बांटा गया है, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। कोई अनुभव हुआ, अनुभव के आधार पर हमने लिख दिया, और एक हमने प्रॉपर प्लानिंग करके एक हमने ट्रायल करे उसके आधार पर लिख दिया। ये 2 भाग बांटे गए हैं। अगर हम टाइप ऑफ क्लिनिकल स्टडी की बात करें तो हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, केस सीरीज, केस रिपोर्ट, केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करें तो हम 2 तरह से इसको बांट सकते हैं, रैंडमाइज, मतलब तुरंत ही हमने कुछ भी रैंडमली हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, और नॉन रैंडमाइज,
नॉन रेंडमाइज जो है सिंगल आर्म ट्रायल कहलाते हैं। रेंडमाइज ट्रायल हमारे कई तरह के होते हैं और अक्सर जो ट्रायल हमारे होते हैं वो रेंडमाइज टाइप के होते हैं। क्रॉस ओवर ट्रायल, फैक्टोरियल ट्रायल, नॉन इन्फिनिटी ट्रायल, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, प्लेसिबो एक्टिव कंट्रोल ट्रायल, एड ऑन स्टडी, रिप्लेसमेंट स्टडी, अर्ली एस्केप, रेस्क्यू ट्रीटमेंट, लिमिटेड प्लेसिबो पीरियड, एडिशनल डोज डिजाइन, रैंडमाइज विड्रॉल, ये सारे के सारे जो है हमारे एक क्लिनिकल स्टडी के तरीके हैं जो हमारे रिसर्च में मिल जाते हैं। अगर हम इनको ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो जो रैंडमाइज ट्रायल हैं वो ओपन क्लिनिकल ट्रायल कहलाते हैं, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल्स कहलाते हैं, डबल ब्लाइंड ट्रायल्स कहलाते हैं, ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल्स कहलाते हैं और ब्लैक बॉक्स डिजाइन। आयुर्वेदिक स्टडीज में ब्लैक बॉक्स डिजाइन का भी अच्छा एक कार्य होता है। अगर ओवरऑल अगर हम नट सेल में इसको समराइज करें तो जितना भी हमारे ड्रग डेवलपमेंट से जो नए ड्रग बनते हैं उसको हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 से गुजारते हैं। फेज फर्स्ट जो है हमारे फार्माकोलॉजी का फेज है जिसमें कि हम प्री क्लिनिकल चीजों को करके ड्रग को तैयार करते हैं। और फेज 2 एक्सप्लोरेटरी ट्रायल है, इसको बड़े लेवल पर हम एक्सप्लोर करते हैं जो हमने स्टडी करी है। और फेज 3 कंफर्मेटरी ट्रायल है, इसके द्वारा हम अपने जो हमने सोचा था जो जिस जिस डायमेंशन पे हमने उसको ट्रायल किया उसको हम कंफर्म करते हैं, वैलिडेट करते हैं, उसकी एफिकेसी को इंश्योर करते हैं। उस एश्योरेंस के बाद हम उसको मास लेवल पर मार्केट में डालते हैं। इसी फेज थर्ड का जो ट्रायल है, जो कंफर्मेटरी ट्रायल है, इसी को फिर हम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद इसके जो है हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के साथ इसकी निगरानी रखते हैं, फार्माकोविजिलेंस रखते हैं। इसके द्वारा फिर हम जो है उसके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वे करते हैं, उस सर्वे के आधार पर ड्रग को ऑब्जर्व करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं या उसमें कोई कमी होती है तो विड्रॉ करते हैं। तो these are the basic overview of the clinical trial। कोई भी दवाई डेवलप होने में 5 से 15 साल तक का एक मॉलिक्यूल में समय लग जाता है। दिस इज सो कॉस्टली, टाइम टेकिंग, रिसोर्स टेकिंग और बहुत ज्यादा रिसोर्स लगता है। इसीलिए आयुर्वेद में सिस्टमेटिक जो एक ट्रायल जो मॉडर्न में जैसे करे जाते हैं ऐसे करने का कल्चर अभी कम आया है। और जस्ट ले दे के एक हम अपना कार्य कर देते हैं, बस निपटाने वाली बात हो गई कि जस्ट हमने 30-50 पेशेंट देखे और उसको एक रिकॉर्ड करके उनका ऑब्जर्वेशन लिख दिया। लेकिन कंट्रोल ट्रायल और उनका जो है सारे फैक्टर को इंक्लूड एक्सक्लूड करके प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रायल करना आज की डेट में बहुत टफ कार्य है। और इसके लिए स्किल्ड मैन पावर जो है हमारी टेक्निकल स्टाफ की बहुत कमी है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा लोगों को जगाने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा नॉलेज शेयरिंग की आवश्यकता है। और इस काम को सीआरओ के माध्यम से आजकल किया जा रहा है। लेकिन सीआरओ भी बहुत पैसे लेते हैं, तो जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे या सोसाइटी में एक बैलेंस के और सामाजिक दायरे के हिसाब से काम करने वाले ऐसे सीआरओ की लोगों की आवश्यकता है। तो जो भी हमारे प्री क्लिनिकल स्टडी है इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं नए ड्रग के पॉसिबल वर्क के बारे में। और फेज 1 में हम उसकी सेफ्टी को, उसकी डोजिंग को हम डिक्लेयर करते हैं। सेफ्टी के लिए हम बेसिक सेफ्टी स्टडी कराते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं, उसकी सारी हैवी मेटल, पेस्टिसाइड, एफ्लाटॉक्सिन और फिजिकोकेमिकल सारा स्टडी कराते हैं। और फेज 2 में हम उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से। और जब बड़े लेवल पर ट्रायल करते हैं तो उसकी सेफ्टी एफिकेसी को कंपेयर करते हैं, कंफर्म करते हैं। और इसको जब हम फिर जो है हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है हमारे ट्रायल की, तो फिर हम उसको एफडीए में अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं। एफडीए से जब कंफर्म हो जाता है तो उसको हम मार्केट में उतारते हैं और पोस्ट मार्केटिंग सर्वे को हम फिर नोट करते हैं। और इसमें हम इवैल्यूएटिंग द ड्रग ओवर द टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट। दीज आर द बेसिक ओवरव्यू। फिर से समझ लीजिए, प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 20 से 80
100 तक के जो पार्टिसिपेंट को लेके ट्रायल करे जाते हैं, फेज 1 ट्रायल। तो आयुर्वेदिक ट्रायल जो जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं फेज 1 की अवस्था में ही बहुधा होते हैं। इसको हमें जो 4 फेज का स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, इस पर कहीं ना कहीं वर्कआउट करना होगा। फेज 2 ट्रायल में हम 100 to 300 पेशेंट तक लेते हैं। फेज 3 में हम 1000 से लेकर 3000 तक पार्टिसिपेंट को जोड़ते हैं, और इसमें मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होते हैं। अलग अलग की कंडीशन अलग अलग तरीके से एवेल्युएट करके उनके रिजल्ट को सब जगह से कंपेयर करते हैं, और एफडीए के अप्रूवल फेज 3 के बाद एफडीए अप्रूवल में जाते हैं। एफडीए जब पूरा रिव्यू करता है सेफ्टी को, एफिकेसी को, उसके प्रोसीजर को, उसके एफिकेसी को, देयर आफ्टर जब हमें ड्रग का लाइसेंस मिल जाता है तो फेज 4 का ट्रायल होता है, जिसमें हम 10,000 से ज्यादा जो है पेशेंट पे ट्रायल करते हैं। मतलब 10,000 से लेके लाखों पेशेंट को जब हम डील करते हैं तो फेज 4 की अवस्था में आ जाते हैं। तो इसको और आप समझ सकते हैं, टेस्ट ड्रग फॉर हेल्दी इंडिविजुअल, सेफ्टी स्टडी, लार्ज ग्रुप के लिए हम करते हैं फेज 2 में, वाइडर डेमोग्राफिक एरिया के लिए करते हैं फेज 3 में, और हम फेज 4 में जो है मार्केट भी चलता रहता है, मॉनिटरिंग भी चलती रहती है। तो अगर हम इसकी बात करें एक्सप्लोरेटरी ड्रग डेवलपमेंट फेज 1 एंड फेज 2, तो फेज फर्स्ट और फेज 2 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेज फर्स्ट में हम एक बेसिक लेवल पे जाते हैं और फेज 2 में आते आते हम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जो उसका जो हमने सिद्धांत बनाया उस पर कहीं ना कहीं हम थोड़े कंफर्म हो जाते हैं। तो फेज फर्स्ट और फेज 2 का डिफरेंस आप समझिए, सैंपल साइज का अंतर है, सेफ्टी, फेज फर्स्ट में हम सेफ्टी की बात करते हैं, फेज 3 में हम एफिकेसी की बात करते हैं। अब अगर हम गोल की बात करें तो गोल जो हमारे होते हैं फेज सेकंड में, बेस्ट डोज और बेस्ट रेजिम को डिसाइड करना, सेफ्टी को कंफर्म करना, administered in the combination with what if anything patient who will respond, degree of efficacy। तो हम इंडिकेशन को हम जो है कंफर्म कर लेते हैं, हम पेशेंट जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उनको कंफर्म कर लेते हैं, और इसके रिजल्ट को कंफर्म कर लेते हैं। अब ये बेसिक आपको मैंने जनरल गाइडलाइन बता दिया कि कैसे कैसे ओवरव्यू होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का। अब बात आती है कि ये जो है ट्रायल की आयुर्वेदिक हिसाब से क्या आवश्यकता है, आयुर्वेद के ड्रग एक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, तो इसके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का रूल 158 पे हमें जाना पड़ेगा। 158 ए में हमें बताया जाता है कि ड्रग लाइसेंस को रिटेन करने के लिए क्या शर्त है, कि हमने इंस्पेक्शन बुक रखनी है, 157 में जो बताए हैं चीजें उनको हमने अनुपालन करना है, हमने जो है जो ड्रग एक्ट के जो भी बॉन्डिंग्स हैं, जो भी कानून है उनका पालन करना है, कोई भी हमने उसको फॉल्ट नहीं करना है। तो ये हमारे रूल 158 ए की शर्त है। 158 बी में हमारी ड्रग की कैटेगरी बताएगी। पहली हमारी 3A कैटेगरी बताई गई, जिसमें शेड्यूल फर्स्ट जो वर्णित बुक्स हैं उनमें जो भी ड्रग वर्णित हैं, जो भी फॉर्मुलेशन वर्णित हैं, वो 3A में आ जाते हैं। इनको शास्त्रीय योग कहा जाता है, इनको क्लासिकल योग कहा जाता है, इनको जेनरिक मेडिसिन भी समझ सकते हैं। जो इसके अतिरिक्त जो शेड्यूल फर्स्ट में जो औषधियां लिखी गई हैं वो 3H कहलाती हैं, जो कि पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन में आ जाती हैं। इसकी 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। बल पोषक, जो हमारे हेल्थ प्रमोटर और जो हमारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैं, इनको अभी रिसेंटली ऐड किया गया। और हमारी सौंदर्य प्रसाधक
जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है इनको अभी डेवलप किया गया, अभी ऐड किया गया। इसमें हम ओरल केयर के लिए, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए और बॉडी केयर के लिए जो प्रोडक्ट है इसको हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी औषध घन, मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट, और ये इट में बी इक्वस एक्सट्रैक्ट, इट में बी हाइड्रोएल्कोलिक एक्सट्रैक्ट और अदर देन दी हाइड्रोएल्कोलिक एक्सट्रैक्ट। बेसिकली दीज आर ड्राई और मे बी वेट। तो these are the basic category. अब ये जो नेक्स्ट इसमें बताया गया कि एफिकेसी किसके लिए करानी, कब करानी, कब नहीं करानी, ये बेसिक डाउट्स रहते हैं कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स के कि हमने जो है क्लिनिकल ट्रायल चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए। तो 158 बी जो है उसमें ये बताया गया कि आपको लाइसेंस जो देना है उसके लिए क्या जरूरत है। ये बेसिकली लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए बेसिक चीजें हैं, क्योंकि हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि हमने लाइसेंस लेना है। तो देने वाले के लिए और लाइसेंस लेने वालों के लिए, दोनों के लिए नॉलेज बहुत आवश्यक है कि हमने कब ट्रायल कराने हैं। तो इसमें आपको पहले आप स्क्रीन पे, स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है? यस यस। हाँ, इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं। तो पहली कंडीशन है सर ये क्लासिकल ड्रग के लिए, 3A ड्रग के लिए। तो पहली तो ये कि जैसी की डोजेज फॉर्म क्लास शास्त्र में वर्णित है, जैसे बटी है, टेबलेट है, जैसी जैसी लिखी है वैसी की वैसी अगर हम ले रहे हैं और उसके घटक क्लासिकल टेक्स्ट बुक के हिसाब से हैं, और अगर उसके इंडिकेशन भी जैसे शास्त्र में लिखे हैं एज सच बता रहे हैं, जैसे पंचगुण तेल है उसमें अगर हमने आम बात लिखा है, उसमें संधि बात लिखा है, उसमें अगर कर्णसूल लिखा है, उसमें व्रण लिखा है, ठीक। तो जो एज सच लिखा उसको हमने एज सच हमने डाल दिया, तो सेफ्टी स्टडी नहीं चाहिए, सेफ्टी स्टडी नॉट रिक्वायर्ड। और इसके लिए हमें फिर लगाना क्या है, पेपर क्या है इनक्लोज करने हैं, लाइसेंस के जो योग पत्रक होता है जो हम अप्लाई करते हैं, उसके लिए पब्लिश लिटरेचर, जो शेड्यूल फर्स्ट की जो बुक है उसमें वो चीज कहाँ लिखी है उसको हमने रेफरेंस देना होता है। इट रेफरेंस मे बी टेकन फ्रॉम द एफआई, इट मे बी टेकन फ्रॉम द एपीआई, और इट मे बी फ्रॉम द अदर बुक ऑफ द शेड्यूल फर्स्ट। और प्रूफ ऑफ एफिकेसी नॉट रिक्वायर्ड फॉर द क्लासिकल प्रोडक्ट। अब अगर हमने डोजेज फॉर्म में कोई चेंज कर दिया, मान के चलिए हमने एक जो है प्रवाल पिस्टी और प्रवाल कैप्सूल बना दिया, या उसका हमने जो है कोई अवले है उसका हमने सिरप बना दिया, या कोई भी जो है हमने तेल है उसका घी बना दिया, वट एनी चेंज इन द डोजेज फॉर्म ऑफ द क्लासिकल प्रोडक्ट under the 3A category, if ingredient are same as per the textual, if indication is as per the textual, then also here safety not required। और इसमें पब्लिश रिक्वायर्ड लिटरेचर चाहिए, और इसमें प्रूफ ऑफ एफिकेसी ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हमने डोजेज फॉर्म चेंज करी तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सीपिएंट मिलाए हैं, एक्टिव नहीं मिलाए हैं, तो एक्सीपिएंट एज्यूम टू बी इनर्ट, सो proof of efficacy not required। Third category, 3A drug, if explore for new indication, then ingredient as per the text, indication is new, then safety study not required, but published literature required or not required, it is the discretion of the technical panel of the drug constituted by the state, concerned state under the drug act। तो वो एक्सपर्ट पैनल का व्यू है कि भाई उसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, उसका अपना एक एंगल है सोचने का, उसके आधार पर वो तय कर सकता है। लेकिन अगर नया इंडिकेशन आप दे रहे हैं, जैसे अगर कोई चंद्रप्रभावती है और आप कह रहे हैं कि इसमें कोई जो वर्णित लिखे हैं उसके अतिरिक्त कोई अगर आप घटक दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्लिनिकल स्टडी रिक्वायर्ड है। तो यही रिक्वायर्ड से आपका स्कोप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल शुरू होता है, और नीड ऑफ द एफिकेसी, नीड ऑफ द प्रूफ ऑफ एफिकेसी यहीं से स्टार्ट होती है। सेकंड कैटेगरी आती है अपनी 3H, पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो इसमें जो है अगर आपका
इंग्रेडिएंट एज पर दी टेक्सचुअल है, और इंडिकेशन जो है टेक्सचुअल उसी रेशनल उसी पैटर्न पे है, जिस पैटर्न पे इंग्रेडिएंट है उसी को शो करते हैं, उसी को सिंक्रोनाइज करते हैं, देन सेफ्टी स्टडी नॉट रिक्वायर्ड। बट जो है एक्सपीरियंस और एविडेंस ऑफ द इफेक्टिवनेस, तो इसके लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं उसके लिए हमारा जैसा भी दिया गया है तो रिक्वायर्ड नहीं है, और लेकिन इसके लिए पायलट स्टडी रिक्वायर्ड है। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए पायलट स्टडी रिक्वायर्ड है, और ये जो है एक्सपर्ट पैनल का डिस्कशन है कि वो उसको आवश्यकता लगती है नहीं लगती है, मतलब, और ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जिसमें हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। आज हमारे आयुष सिस्टम में मोर देन 10,000 फार्मेसी है जो आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी को डील करती हैं, लेकिन बहुधा जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन पायलट स्टडी का भी अभी बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं है। लेकिन अनुभूत योग की श्रेणी में कहीं ना कहीं एक लाइसेंस अभी दिया जा रहा है, और इसको हमें पायलट स्टडी को भी साइंटिफिक तरीके से करने के लिए, सिखाने के लिए एक मॉडल डेवलप करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी तरह जो हमारे जितने भी जो एएसयू ड्रग हैं जो पेटेंट और 3H कैटेगरी के हैं, अगर इनमें शेड्यूल E1A अर्थात कोई मरकरी, कोई भी आपका कुचला, बचना, भांग, ओपियम, कोई भी विषाक्त द्रव अगर इसमें है, तो फिर हमें जो है अगर इंग्रेडिएंट एज पर टेक्सचुअल भी होंगे और इंडिकेशन एग्जिस्टिंग एज पर दी जैसे हमने ले रखे हैं उसी तरह से होंगे, तब भी सेफ्टी स्टडी रिक्वायर्ड है। तो मोटा मोटा ये मान लें कि जब भी अगर आप सेफ्टी स्टडी विषाक्त द्रव डालेंगे, विष द्रव डालेंगे, चाहे वो विष हो, उपविष हो, शेड्यूल E1 कैटेगरी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। अपने गुरुदेव को देख रहा हूँ, हमारे प्रोफेसर BK अग्नोत्री जी हमेशा डायनेमिक मोड में रहते हैं, उम्र का इनके चेहरे से पता ही नहीं चलता, हमेशा एवर टाइम डायनेमिक। और कल दीक्षांत समारोह में सर ने आशीर्वाद दिया, सर धन्यवाद देता हूँ हृदय से। हमारी एफिकेसी इसके लिए जो है लिटरेचर का जो रेफरेंस है वो रिक्वायर्ड है, और क्लिनिकल ट्रायल रिक्वायर्ड है। तो अगर मोटा मोटा माने कोई भी कैटेगरी हो, अगर शेड्यूल E1A ड्रग अगर पड़ा है तो उसके लिए सेफ्टी भी चाहिए, उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल भी चाहिए। और अगर मोटा मोटा अगर बेसिक अगर ओवरऑल अगर बात करें, जब भी अगर क्लासिकल जो टेक्सचुअल रेफरेंस और टेक्सचुअल इंडिकेशन पे आप वर्क करते हैं, तो आपके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की इतनी बड़ी बाध्यता नहीं है। तो ब्रीफ कर ले यार, मैंने हाँ जी, टाइम हो गया ना। हाँ, तो these are the basic pattern of this quality for the drug. These are the basic pattern for the quality evaluation. Yes, so I think I am trying to give overview as suggested by the respected Dr. Pawan Sharma sir, whoever Yes, please carry concerned on. with the drug, उनका एक लंबा अनुभव है, एक पूरी लाइफ जितनी हमारी एज अभी सीखने की हुई होगी उतनी उनकी पूरा अनुभव रहा काम करने का, उससे ज्यादा। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से लेके एकेडमिक सभी जगह उन्होंने अपनी प्रेजेंस, अपने हस्ताक्षर दिए हैं। तो मेरी एक कोशिश थी कि हमारे बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं इसमें, मैं अभी बहुत उनसे सीखना है, अभी बहुत कुछ एक विद्यार्थी हूँ इस क्षेत्र में। तो प्रोफेसर CK कटियार सर ने जैसा कहा कि जो है आज अपग्रेड करने की जरूरत है, आज साइंटिफिक चीजों को लागू करने की जरूरत है, और आज जो हमारी साइंटिफिक विजडम है, ग्लोबल साइंटिफिक विजडम, उसको आयुर्वेदिक अप्रोच के साथ, इसको अगर एक शब्दों में कहें, ट्रेडिशन विद टेक्नोलॉजी इज रूट कॉज of future success of our system. So I look forward for all participants
for their patience hearing. और मुझे लगता है कि किसी भी सवाल के जवाब देने के लिए, क्योंकि सीके कटियार सर हमारे आयुर्वेदिक फार्माकोपिया मीटिंग में भी 2009 से हमारे साथ रहे हैं, अभी कुछ समय से, और जब से उत्तराखंड आया हूँ तब से थोड़ा अभी नहीं जा पाया। तो सर के साथ काफी हमारा लंबा डिस्कशन हर जगह रहा है। और सर ने जितने रिसर्च मल्टीपल, मतलब मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, और चाहे क्लिनिकल की बात हो, रसशास्त्र की बात हो, मतलब मैं समझता हूँ कि लाइव एनसाइक्लोपीडिया है सर। तो मुझे लगता है कि कोई भी सवाल जवाब के लिए सर जो है राइट पर्सन है, और मैंने अपनी एक कोशिश करी उसके लिए। पवन शर्मा जी और सारी जो पैनल है उनका मैं हृदय से Excellent. धन्यवाद सर। I would like to request Dr. Parikshit Devnath. Dr. Parikshit Devnath, Hariom. Namaste, sir. Thank you, sir. I will start the presentation. पहले मैं सबको मेरा धन्यवाद कहता हूँ IRES को कि मुझे इस अवसर पे मौका दिया गया है कि इस अवसर पे मुझे आयुष समृद्धि का जो ग्लोबल GCP series है, the 518th one. So I am thankful to all my seniors present here and the Ayurvedic experts here. And today आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रूफ ऑफ एफिकेसी, बेसिकली मेरे पहले स्पीकर डॉक्टर कुरेरे जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं इस टॉपिक को। फिर भी मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूँ, लाइक द एस्पेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि व्हाट वी नो अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि हमें पता है कि क्लिनिकल ट्रायल इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा, जैसे हम लोग आयुर्वेद में हम बोलते रहते कि क्लासिक में तो बहुत सारे मेडिसिन दिए हुए हैं, और उनमें से हम लोग जो आचार्यस हैं जैसे चरक, सुश्रुत, भागवत एंड मेनी मोर, उन्होंने अच्छी तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स करके ही जो जो हम लोग का क्लासिकल मेडिसिन है उनको हमारे सामने पेश किए हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट ड्यू टू द रिच रिसोर्स ऑफ आयुर्वेदा and our acharyas, we are able to get those formulations and medicines which are very much helpful to our present society and present humanity. So उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि हमको क्लिनिकल ट्रायल्स, व्हाई वी नीड क्लिनिकल ट्रायल्स। सो एज पर डेफिनेशंस वी ऑल नो क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, बट जस्ट आई वांट टू से दैट कोई भी मेडिसिन हो, एनी मेडिसिन व्हिच इज for use of the humanity for any kind of disease, उसका ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस को हम लोग जांचने के लिए, to prove the effectiveness, we do clinical trials. And there are many different types of trial methods. Sometimes there are biases. There are methods like single arm trials, multi-arm trials, multi-centric trials and everything. And also correlation versus causation and effect and everything. Also हम लोग देख सकते हैं, we can see that through clinical trials we can get the side effects and complications of a particular medicine or drug which is being trialed in persons. But again, as we said, the acharyas, the Ayurvedic classics have mentioned many groundbreaking truths about many Ayurvedic medicines. But again, in the modern times, clinical trials, they are not always the best path theoretically, maybe, क्योंकि in reality many things cannot be proved or which are not feasible. So now come to the aspects of India, as we are talking about Ayurveda and the traditional medicine. And as you know, the traditional medicine or Ayurveda is the hub of the world. Hub is India. So as we know, clinical trials, as per Government of India, we need to register the trials publicly to be documented in the Trial Registry of India. And it is being regulated by various government agencies and laws like CDSCO and CTRI. These are the
regulatory authorities. Also, the drug controller of the various states regulate and approve the clinical trials. And also the most important and body is the health ministry, or at present since 2014 we have the Ministry of AYUSH, who have been taking care of these situations. So basically, what do we know about clinical trial protocol? As you saw, the basic, to do a clinical trial, we need to set up a blueprint, and that blueprint is processed through a protocol. And in a protocol, what we need? We need objectives. What we want to do, what we are seeking, that is the main thing. So there are objectives which are primary and secondary, and also next comes the important factor. If your results are based on the data, and the data is not correctly done or correctly analyzed, for that the importance of biostatistics comes, and the importance of biostatisticians comes. Then again, there is the patient selection criteria. We need to know perfectly, as for the particular project of the trial, what are the inclusion and exclusion criteria. Then now the drug intervention or the therapeutic innovations in terms of Ayurveda, we have many fields, like we are using drugs, we are using procedures such as Panchakarma, such as surgical procedures like Kharsutra, and also yoga. Then for a drug to be assessed, we need to have some safety assurances. Here, the toxicity study comes. And the finally, efficacy, which includes the clinical and pharmacodynamic process. And another one thing, recent for the past many years, a new concept of clinical trial has been emerging, that you need to develop quality of life. You assess the quality of life, because quality of life is a very important factor assessing the, what I can say, the drug, how the drug has been used in the community or the patients, and how the patients feel mentally, physically, and sociologically. All these aspects are covered by the quality of life. And finally, the biostatistics process or statistic process, which includes the analysis and interpretation of the data. Next, there are some questions which has to be answered in the clinical trials, like why, who, what, which, where, when, and so what. We're doing clinical trials, what is the outcomes and everything, which these questions are to be answered or subjected to our queries. Now, in the clinical trial, if you come, there are phases of clinical trial, and where we see primary objectives and secondary objectives which are need to be determined. I'm not going in the detail, because my previous speaker has already told that there are many phases of clinical trials: phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. So basically, what we need to know, that the important aspect is the comparative studies, or what we can say case control studies, or randomized control trials, where we study a group which has been given the test drug and the control drug which has been given a placebo or something which is the standard drug. And to establish a control, we have historical control, concurrent control, randomized, like that. And at present in the world, RCT or randomized control trial is also the best or the gold standard of research, and in which the bias are minimized. So what is the purpose of control group? That here we allow the discrimination of patient outcomes caused by test treatment versus those caused by the other factors. And it is very necessary and to be informative. As you can see, the significance of control group, inference are drawn from the trial, ethical acceptability of a trial is important, degree which is bias minimized, different subjects are there, kind of endpoint that can be studied, credibility of the results, all depend on the control group. So use of the control group, also there is a placebo control. Placebo control, there is sometimes when even if suppose we are giving a asa varishta to a person, and
like that, we just same something make with water and give some color in it and give the patient. It has been seen that placebo also acts as some kind of medicine because it's all mental. So, as an example, there was a vitamin C trial for common cold, and placebo was used, and it was indistinguishable. So, many people had told that they have effect also taking placebo medicines or placebo substances. So these are the history of control studies, and as I already discussed, that randomized control trial is a gold standard, but it has some disadvantages because there are sometimes subjects may not represent general patient population. Many new patients and number of patients are added, which are more than which is needed for recruitment, and acceptability among the investigators or the doctors who are doing the studies or physicians, because sometimes the physicians refuse to take control because there is not such controlled group of drugs in case of Ayurvedic studies or studies with herbal medicines. Again, we see that comparing the treatments, we get what is the fundamental principles of control studies. Randomization is a very important aspect, and also blinding. But again, as I say, in terms of Ayurvedic studies, sometimes it is not feasible for doing blinding because the forms of drugs may be different, the therapeutic procedures may be different. So blinding is sometimes very not possible. Like if you are, suppose, if you are doing a study on Panchakarma and we are trying to compare the therapy of Vamana and Virachana. So it is not possible to blind that procedure because it is a totally, entirely different process and therapeutic aspect. So again, for what our topics is, today's topic was proof of efficacy. So when we say that proof of efficacy, after the phase 2 trials, that at the starting of phase 3 trials, the efficacy is being adapted. So there are many commonly used phase 3 trials, type of phase 3 trials, as you can see, parallel withdrawal, group cluster, randomized, crossover, factorial, large sample, equivalence studies, and sequential studies. So now we came to the type of Ayurveda. What is the present scenario in clinical research and the present trend? We already know, and it's already been discussed, and everybody knows that classical formulations are already standardized and they are time tested and safe to use. But at present, what we are seeing in the industry, many new proprietary medicines and herbal formulations are coming out, and they are being tested at the level of phase 4 trials and post-marketing surveillance levels. But the drawback of the present formulation creation and the efficacy, as per my knowledge goes, there is something to think about. Because as we know, during the classical times of the ages of the acharyas, like the Charaka, Susruta, Vagbhata, Madhava, Bhavmishra, at that times, the concept was at a very sophisticated level, and I think we don't understand today the levels of sophistication which was being introduced by our forefathers or by our acharyas of the classical Ayurvedic physicians. Because at present, modern science is not able to decipher the Ayurvedic pharmacology, that is Ras, Gun, Virya, Vipak, and it cannot be translated in modern terms of any device or like that. We are not able, at this moment, we are not able to make a device which can measure the Rasa, Guna, Virya, Vipak, or anything of such kind. So there is a gap of understanding the Ayurvedic pharmacology. And also, as I told, the modern pharmacology is based upon different diseases. And when we are making the modern formulations at present, like we are taking, suppose, anti-diabetic herbs. So we are taking, as we do modern pharmacology, we are knowing
These kind of herbs is being used for diabetic process, helpful in diabetes, like suppose say Haridra, Neem, etc. And we are just compiling these drugs and we are making a formulation. But it is not the right way to do it. As I told, we are not able to decipher the coding of the languages or decipher the complexities of the Ayurvedic pharmacology. That is Dravya Gun and Rasa Shastra or whatever Vaishya Kalpana you can call it. And also, at present, different companies in the industry level, they are preparing Ayurvedic medicines just of hinge, they are taking particular drugs where modern medicine have told by doing research, these herbs acts on these certain devices and they take 10 or 20 drugs together and put it in a formulation and producing the medicines. But here the complexities comes. We don't know if adding those particular drugs to modern concept of pharmacology, are they safe for use or they are efficacious? Or their efficacy is to particular diseases being proved. So for that we need clinical research, not clinical research at the level of phase 1, phase 2 or phase 3, because already we know the herbs of the particular Ayurvedic classical formulation is being standardized by the government of India and other regulatory authorities. But the particular formulation by any company or any industry which is being formulated is safe, first of all, because we don't know the drug-drug interaction, and are they safe for use in terms of safety issues, because we don't know how a particular drug is interacting with other drug when we are comparing or we are formulating a particular medicine out of our modern day methods. So, as per Ayurvedic research is concerned, as I have already been discussing, that many drugs which are being formulated or cooperatory medicines which are being formulated are in the market. So to test the safety and efficacy of the so-called these formulations, because there are no regulatory rules that a new formulation cannot be come to the market with a clinical trials. Even though WHO and our government of India, Ministry of AYUSH is trying to establish that whatever new formulations coming to the market should be undergoing clinical trials and its proof of efficacy. Here, the proof of efficacy is a very important term because we don't know how effective the drugs, even though in lab atmosphere, the drugs are being confirmed that they are able to have some efficacy, but in humans or in trials related to human participants, we don't know how those drugs act, even though those drugs in the market. So we can start through the process of post-marketing surveillance, and through here we should get that what are the new risks are there, also establish the known risks. Also, there may be some medication errors because the drug is on the market. People don't know who are consuming the drugs. Is it best to take with before the meal or after the meal or at empty stomach or before going to bed, or what should be the anupana of the drugs, because anupana is a very important factor when you are consuming Ayurvedic drugs. And also to know when to which persons those drugs are unsafe, because as we know, I'm going in later I will discuss that recently AYUSH Genomics was a project which described which correlated the Ayurvedic Prakriti with the present genetic structures of human beings, because in our Ayurveda, whatever drugs we are using, we prescribe the drugs according to the Prakriti of the person. And that is a very important factor to measure the efficacy of the drug in a person.
And here is a history of post-marketing surveillance and evidence of the RWV. That is, it began in the 1950s with the guanfacine, and in 1962 it expanded where FDA intervened. And first in 1969, ADL and adverse drug reactions reports are computerized. In 1993, there was a software with MedWatch or organization who was facilitating the reporting. Then in the early 2000s, public concern of drug safety was introduced. In 2007, FDA passes Amendment Act, and these are the sources of drug reaction, like how drug safety info can be received. And the most important was the observational studies, what we are going to discuss in the post-marketing surveillance concept, like the strengths of RW, like we detect rare adverse events, timely availability of data, national and international coverage is there because the database is being formed. And as Indians, I think we are a little bit behind on the formation of databases, because even the databases are not complete. And I think we should focus on developing a database on drug safety and drug usages. And limitations are also there, underreporting there, missing of inaccurate data is there, lack of control is there, and also lack of accurate denominator, difficulty of detecting events. And also, sometimes it is not usually possible to determine the causality. Then robust methods to adjust for the confounders and control bias is very important, because residual confounding can still be a problem, because according to our treatment choice, physicians may choose many factors based on the treatments. Some of these related to outcomes we are interested in, and also outcome ascertainment. Then now we come to the real world data and the real world evidence. What is real world data? These are the data related to patient health status, delivering health, and which are been recorded electronically. And in European countries or in the Americas, there is a electronic health record or EHRS where they record all the data. And the real world evidence is the clinical evidence regarding the usage of potential benefits of risk of a medical product derived from the analysis of RWD using resources other than traditional clinical trials. So RWD is not simply anecdotes based on RWD. It involves data curation. There are discrepancies of the data which comes to us. It may be faulty. So we need to look at the accuracy of the data, and also the data which needs to be accurate. There, the importance of study design on the protocols and everything comes. So that RWD states that strong understanding is there that data can not answer everything, real data, because some things are observational which are not recorded. And most critical element the researchers must consider is whether we can use integration or observational design, where observational design have no intervention, but instead just observe what is happening in the real world. Like, as I said, in PMS, the drug is being used in the community and everybody, a marketed product is being used. So what we are doing as the experts or the study design which we develop, we just watching what is happening and we record whatever we get. So what is the safety outcomes, and usually which are more easily examined and effectiveness? What we overcome the RWE is, what are the first orders questions and that need answers, like effectiveness versus safety. Because there may be some drugs, even in Ayurveda, which are effective,
but sometimes which are not safer for you. Suppose we know sometimes the Rasul Shadis can be can have some safety issues if you are considering to modern parameters in some diseases. But these are not proven, so everything can be, there is a very wide scope to develop all these things. And also we need to have new study designs and analytic techniques, because matching, stratification, weighing, and multivariate regression models have made progress in the managing such limitations. So in the terms of the traditional or herbal research, many new arenas are there which we need to address at this moment. Now, if you come to traditional research methods in Ayurveda, there are some 10 points like Praman, Prameya, Samasya, Prayojan, Drishtanta, Siddhanta, Abhaya, Tarka, Nirnaya, and Vada. I know my learned seniors and my learned colleagues everywhere who are present here, they all know the basic concept which are mentioned in the methods of Ayurveda. So what we need, because in terms of Ayurveda, we really don't need the research methods or the designs which are being stipulated by the present conventional science of the modern allopathic medicines, because Ayurveda itself is a different system. So there is a need for development of specific models for Ayurvedic research, because Ayurveda have unique principles and approaches. Because when we sometimes conduct studies based on the modern principles or modern concept of research methodologies, sometimes the results are not what we like to have, or sometimes it happens that what we desire or what are we expecting the outcomes to be, it's not coming what we expect. Like negative results we tend to get because of the faulty drug design of the studies, and also sometimes ambiguous results are being developed or received. So what I want to say that there is a methodology crisis in Ayurveda. I know all my seniors are there and respected teachers are there, and I would like to request them that seriously think about developing research methodologies based on the Ayurvedic principles and then correlate it with the modern concept of allopathic medicine. So a lot of research is being conducted, as we know, in different levels in the field of Ayurveda, adapting different guidelines, methods, protocols, and we are having different kind of research outcomes. But sometimes there are very low and poor translational value, because every time we have to keep in mind whatever research, whatever resources we are being used are for the good of the humanity. And if we don't get the desired results to prove something efficacious for the humans or the human race, then again the research work which we are targeting is faulty. There are many guidelines like GCP for ASU drugs, ISMR guidelines, GCP guidelines by CDSCO, WHO, CCP, but there is no single comprehensive directive to conduct research in IRES sector which is available at this moment. There is CCRS, Ministry of AYUSH is there. They are trying to develop many new concepts and research methodologies, but still we are yet to prove those methods are 100% foolproof. So success and failure are their part of and parcel of our life. And when we know that CCRS, the research organization of Ministry of AYUSH, they have categorized research in different aspects: literary, conceptual, clinical, and drug research. But according to our available resources and data, only successful thing we have claimed is that the literary research and the literary development, literature development, what we can say. So again,
Another drawback in our system, not drawback, I can say, we are a little bit behind because whatever information we are receiving, it is not at the highest level and it is not published properly or with proper standardization. So there is a notion like publish or perish. So we need to publish more with more scientific acumen and having the standard of publishing research at par with the present day modern research. So basic principles of Ayurveda we know which are need to be more deeply looked after, like the Pancha Mahabhuta and Tridosha theory, and proved at the level of modern day scientific levels. Among them, one of the is that concept of Agni, Prakriti, and Ayurveda biology, and which need to be understood the basis of present day parameters. So what is in the present drug research, there is a lack of funding, participation from industry is not that much, or even if there is participation from industry, they want result-oriented researches, but which is not sometimes true or sometimes not feasible. Safety issues are important factors and quality control also. And sometimes guidelines are not strictly monitored or adhered to. And also monitoring is a very important factor. Legal aspects are there. There are many false implications or falsified जैसे हम बोलते हैं claim करते हैं of different drugs which are in the market and are all been marketed that this can do magical remedies, but there is a legal aspect also which is a very important to look after. So when there is a important of proof of efficacy, two important or three important concepts are there which are being recently developed. Two has been developed by me, and I have published few papers on those. That is two fields, that is IU pharmacoepidemiology and IU nutrigenomics, and also the concept of reverse pharmacology, which was already previously there and developed by Professor A.B. Vaidya and Professor P.K. Devnath. We know that the reverse pharmacology approach is a bedside to bridge. But in the modern concept, we first describe the molecule and then come to the clinical trials. And Ayurvedic concept, what we do, that is the bedside to bench. From clinical trials at the which the drug is being used in the population, we go back to the molecular level, toxicity level, and like that. And also important factors need to be touched because still we are in the infancy, because according to the research in the modern aspects like the Rasha Shastra is a very important factor, because sometimes we forget the importance of our metallurgical advancements. And the Rasa Shastra or medicines which having heavy metals are like magic drugs, because everybody is there. They all know the magical powers of the Rasa Shadis in the present era, and through which many diseases can be tackled. And another aspect is the personalized medicine concept. Here it's been discussed that while doing Ayurvedic designs to do clinical trials, we say every person is defined, and so every drug needs to be personalized according to the person's needs. And one of the basic criteria we go through is the Prakriti. So there is a need to establish a research model, since we have thousands of Ayurvedic formulations, and it's not very easy and it's a very difficult task. But again, India is progressing, and we can join hands together to make this or this type of situations possible, where we can take research products of every formulation. Like, say for example, we have many postgraduate institutes in India where students are learning to do research. Why not we present them with every available formulation in Ayurveda, and at least we can gather some kind of data in it? Because personally, I think if there are 10,000 drugs in Ayurveda mentioned in the classics, we are just using probably 1,000 drugs. So what about the other 9,000 drugs? We don't have the data. Let's pledge that
all the scientific or budding researchers take some sort of project which is having one kind of formulation which has not been taken over previously. So while I was discussing the importance of oil pharmacoepidemiology in the present status on the proof of efficacy, because oil pharmacoepidemiology is a clinical or the field of Ayurveda which joins Ayurveda, pharmacology, and epidemiology. And in other words, it applies the methods of epidemiology in the content area of Ayurveda and clinical pharmacology. So by definition, it is a study on the use of and effects of Ayurvedic herbs and drugs in large number of people with purpose of supporting a rational and thereby cost-effective use of safe and effective Ayurvedic drugs in the population. These are some studies which are being done previously, and it's a very important area which needs to be tackled, and much more research works need to be done. So important areas of clinical trials, because we need to follow some rules and regulations like GCP, IUS, GMP, IUS, GCLP, IUS, GAP, IUS, and the focus areas at present can be Panchakarma, Rasasaris, and the Rashayans. So also health research is a area where the proof of efficacy is very important, like the use of quality of life parameters inducted in clinical research with standardized questionnaires, and which can be combined with Ayurvedic parameters and can be standardized. Here the importance of biostatistics comes, because there is one sort of thing that is called Convac alpha, by which we standardize a questionnaire. Then another concept areas of work is the Ayurvedic adjunct therapy. As we know, many places modern drugs are being used in the clinical research. So to test the efficacy or proof of efficacy of the drug, we can add a particular drug with a standardized medicine. Like for example, previous works were done in the field of pulmonary tuberculosis, where the present day modern tuberculosis therapeutics with the present antibiotics are given, and along with Ayurvedic drugs were tagged along. And they tested the efficacy of the drugs in different groups with different Ayurvedic adjunct therapies. And a very good, astonishingly, we got many good results, where even at the computational level of drug to drug interaction, and also the where in computational research we have found that ashwagandha is a very good bactericidal, which was being told previously and now proved through modern technologies. Another place of is the concept of iogenomics and ionutrigenomics, where ionutrigenomics is the, since we in Ayurveda we say many of the drugs or herbs is a part of food and medicine. So whatever sometimes they're consuming the foods which acts as medicine in our body, but we sometimes I don't know what particular food is based and good for our according to our prakriti and all our genetic makeup. So ionutrigenomics and iogenomics can together prove the prakriti where the particular foods are consumed and which are according to our needs of the genetic makeup or the genetic phenotype of the particular person. Here is some publications also based on the ionutrigenomics aspect. So research in Ayurveda needs knowledge, education, training, empowerment, and the most important is the collaboration. So when we are doing clinical research, there are 4 goals, and by these goals we can presently do research of which I prove the efficacy of medicines. Right? First is the right drug, then the right patient, the right dose, and the right time. These 4 aspects is always to be kept in mind while designing or involving into a clinical research involving Ayurvedic medicines.
Now, I come to the aspect that whatever we are doing in the present day, that in MedPharma CRO, in my institute, we are doing medical research, and we have 20 more than years of experience of doing clinical research and research on post PMS studies. And what we specialize at this moment is the proof of efficacy, because proof of efficacy is a very important aspect in terms of Ayurvedic studies. And as previously Dr. Kurere has mentioned, contract research organizations play a big role in the present scenario, because not all the problems of all the clinical studies or research works can be reached through what do I say, academic research platforms. So industry plays a big role, and at present the Ayurvedic industry or pharmaceutical industry is some few billions of rupees or billions of dollars. So clinical research in terms of industry plays a big role, and presently WHO has stipulated some guidelines and GCP guidelines to conduct research in traditional medicines. Also, the government of India has stipulated the Indicity Rules 2019, which specifically gives some guidelines on how to conduct researches. So, in our present CRO, we do clinical research, provide clinical research services where we develop new therapies. Sometimes we do formulations based on different aspects and new diseases. We try new now formulations in new diseases, or we blend different formulations to work on new diseases. We have a consultation regarding how to approach a clinical trial project or any kind of clinical research, may it be preclinical trial or clinical trial or post-clinical trials. We also do for outsourcing services. We also do conduct medical communications. We have the innovations to give frontline updating of remedies, advanced and admitted delivered to patients to our medical affairs system. Whatever I discussed previously, the real world data science is a very important thing, that we need to have a generate data. And India, what we lacking is the database, or which is we need to have a real database of all the clinical data which have been undergone, clinical trials undergoing, and online updating the data. Also, in Europe or in basically in England, there is a database for the clinical practitioners also. The government have given a software where every patient, even it comes to a private practitioner or a hospital or everything, the patient with his unique identification numbers gives the doctor his information or his information, and whatever the treatment undergone through a common software, all the data is put in the database. So whenever the patient visited any doctor or any hospital, the hospital gets a thorough previous history of the patient, where in India we lack this thing. But there is a clinical, I have heard that government of India have already started a database on clinical research data and also the patient repositories. So this is a very good initiative, but immediately we need to focus on this thing and make it the database larger, because at this moment we can whenever in our present situation, whenever a patient need to get admitted in a government hospital or any private hospital, they require the Aadhaar card, which is maybe we can say the unique identification number for every citizen of India. So we need to bring all the data of every hospitals and have a common database where we can get the data from the software
and which then will be helpful to analyze or anything or to get ideas or anything from any drug or Ayurvedic origin, to have some sort of analysis. And through this, even the use of classical medicines in different kind of diseases, we can have a ready-made database for the proof of efficacy. So different areas are being covered in CROs. And also the importance of CRO is that there are not many CROs in India which are looking after the AYUSH system at this moment. If you go to the modern allopathic system, there are many contract research organizations, because many of the research are being funded privately and they have been taken care of. But in AYUSH industry or AYUSH system, still the modern research or the research scenario is lacking. And there is a need for the importance of CROs, where the AYUSH industry will come up and keep projects, and where we can certainly make up to get the or study the efficacy related to new drugs or new formulations. Thank you. This is what I need to discuss. And I thank my organizations, especially Dr. Pawan Sangma sir, and also previously Dr. Katia sir has spoken about the industry related need of efficacies and proofs for the research works and everything. So I once again thank everybody for giving me the opportunity. And now what we think that we need to come together as a unit and develop the database for research, and also there is an importance for AYUSH pharmacoepidemiology. This is a very new field which could be developed to establish more predominantly the effectiveness of Ayurvedic drugs in the present scenario. Thank you, and thank you all. And by this, I complete my presentation. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Parikshit. Thank you very much. Nice explanation. Very logical and nice explanation. शिवलिंग का योनि का सब कुछ मिलना है, अच्छा नए अच्छा मिलना. Thank you, Dr. Parikshit. Thank you very much. अपने वो कोरेला जी का हो गया. हरिओम. पवन जी आप. हरिओम. नमस्कार जी. नमस्कार. नमस्कार. आप काफी थके हुए लग रहे हैं आज, लगता है ठंडक बहुत है. मैं आगे की कार्रवाई संभालूं. It's our pleasure. First of all, I would like to thank Dr. Parikshit Devnath ji, as he completed the rest of the part which has been left by Dr. Kurele. It would have been our great fortune if by this time Professor C.V. Jha sir and Professor E.Sh. Sharma from Mauritius would have been with us. I'm sorry that he is not now in our participants list. Otherwise, they would have told me a lot on this issue, especially where Mauritius, where the Ayurveda has got full-fledged position. So what sort of efficacy proof are required by their government in that country, first. Now, second, whatever the comment be given by any of our experts which are there on our today's platform, rightly suggested by Dr. C.K. Katiyar ji, that had Kaustubh Upadhyay be here, he would have definitely thrown some light that in what way AYUSH research pattern could be relaxed to that extent. What today's discussion, which has been put forward with our two distinguished guest speakers, could there be any sort of relaxation from the government side, that for especially the small scale industries persons, or those who cannot afford to pay that much of the say payment or means fee for the conducting the research, could be there any relaxation so that the quality medicine could be available to the right person, or to the even the poorer section or the outreach persons, so that only the manufacturers are just going through is this vicious circle, that
when they will start research, and when, after how many 10, 15 years after they will get some efficacy and proven fact real, then only the preparation will be in market. And by that time, so many patients would have gone somewhere else. So if any sort of soft corner in this total schedules and the relaxation term, our Kaustubh sir could have been thrown light better. But now, with our present galaxy, I've got two senior persons like Dr. Sadhna ji, Dr. C.P. Sharma sir, Mahesh Sharma sir, and Professor Nishant Shukla ji. Though they will say that I have not got that much of experience of this field, and of course that the clock is also saying 11:15, so we are scared that I would like to invite such big guys, those who will come forward by their own with the positive suggestions, if at all there could be any relaxation, or they can throw light in some add-on session. Thank you so much. Dr. Sadhna ma'am, to start with, I will invite Professor Sadhna madam to say something. Thank you. सर नमस्कार अभिनेत्री जी, नमस्कार पवन कुमार शर्मा जी। आज के दोनों वक्ता है अपने डॉक्टर कुरले जी और डॉक्टर परीक्षित जी, ये दोनों ने जो फार्मेसी, प्रॉपर आयुर्वेद फार्मेसी, मॉडर्न फार्मेसी से जो मेडिसिन के लिए रिसर्च मेथोलॉजी के लिए जो भी क्राइटेरियाज है, जो भी उनके नियम है, उन्होंने बताया। मैं थोड़ा सा एक ऑर्डन करना चाहूंगी कि आयुर्वेद के मेडिसिन को हमने रिसर्च के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, और मैं हमारे सबसे पहले तो हमारे जो आचार्य है उनको मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ कि हमारे शास्त्रों में उस वक्त कुछ भी रिसर्च यानी कुछ भी नहीं था, फिर भी जो मेडिसिन हमें बताई गई है, जो फार्मूले बताए गए, वो सटीक है। एक भी औषधि ऐसी नहीं है कि उसका हमने जो लिखा है और उसके विरुद्ध कुछ हुआ है। जो भी हमें अप्तोपदेश मिला है या जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हमें प्रत्यक्ष मिलता है, कोई मेडिसिन हमें मिलती नहीं। तो उस 500 साल पहले जो भी उन्होंने रिसर्च किया बिना साधनों से, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसी को हम आयुर्वेद के जो वैद्य है, बिल्कुल छोटे हैं, उनके सामने हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं भी करीब 15 से 20 साल गाइड रह चुकी हूँ पीजी डिपार्टमेंट में नागपुर में। तो मुझे इतना ही कहना है कि पीजी स्टूडेंट को जो हम रिसर्च करने देते हैं, क्योंकि वो कंपलसरी है, कोई भी ड्रग लेके उनको जो थीसिस लिखना होता है, जो भी रिसर्च करना होता है, वो रिसर्च उनका डिग्री मिलने तक होता है। डिग्री मिलने के बाद उसी रिसर्च को जो भी उन्होंने 2 साल में वर्क किया उसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए या उन्होंने भी पब्लिश करना चाहिए। जो भी अच्छा है, उसका बुरा है, जो भी सेटिस्फैक्टरी उनका रिजल्ट मिला है पेशेंट का है, या हर एक डिपार्टमेंट में होता है। अभी तो करीब 14 डिपार्टमेंट में पीजी चालू है हमारे यहाँ। रसशास्त्र मेन है और चिकित्सा तो है ही उसमें। तो इस तरह का उनको भी आगे चांस मिलना चाहिए ताकि हमारा जितना भी रिसर्च होता है पीजी इंस्टीट्यूट में तो वो हमें फायदा हो सकता है। दूसरा एक उसमें मुझे एक और भी मिला है कि पीजी इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े हैं, काफी जगह है, जैसे जामनगर, बनारस, जयपुर या और जगह है, तो उसके अतिरिक्त अभी जहाँ जहाँ भी पीजी चालू है वहां पे जो रिसर्च करते समय हमें जो मॉडर्न पैरामीटर उसके सपोर्ट में हम लोग लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल में, तो उतना हमारे पास साधन नहीं होते आयुर्वेदिक कॉलेजेस में। तो रिसर्च में थोड़ी काफी सारी अड़चनें आती है, क्योंकि पैरामीटर, मॉडर्न पैरामीटर मीटर के लिए हम जाते हैं तो बिफोर आफ्टर करीब एक पेशेंट के लिए उनको 2 या 3 बार उनको इन्वेस्टिगेशंस करना है, तो उसका जो खर्चा आता है वो काफी सारा आता है, तो स्टूडेंट को बेयर करना कठिन होता है। तो वो अड़चनें काफी सारी आती है। तो जो एक साइंटिफिकली रिसर्च होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अब बड़े बड़े फार्मेसिस्ट कर लेते हैं, पर अभी जो हमने फोकस किया है कि इंस्टीट्यूट पे पीजी स्टूडेंट के लिए, तो पीजी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च के लिए हम लोगों ने आयुष से मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ पीजी इंस्टीट्यूट है, जहाँ जहाँ पीजी की मान्यता मिलती है या देते हैं, उनको ये पैरामीटर उन्होंने लगाना चाहिए कि आपके यहाँ रिसर्च की एक लेबोरेटरी, रिसर्च लेबोरेटरी हो
रिसर्च के लिए जो रिसर्च ऑफिसर्स होते हैं वो होना जरूरी है, किसी किसी कॉलेजेस में है, मेरे यहाँ थे आयुर्वेदिक कॉलेजेस में, वो भी पोस्ट होती है उनकी। तो ये तो हम लोग नहीं कर सकते, इनके लिए तो उन्हीं लोग लगेंगे, रिसर्चर लगेंगे। स्टैटिस्टिशियन का भी 4th ईयर में सब्जेक्ट आ गया है, पहले तो पीजी के लिए फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट था, पर स्टैटिस्टिक ये सब्जेक्ट अभी बीएमएस के फाइनल ईयर में आया है, तो वो पढ़ाने के लिए उन्हीं लोग लगते हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या है, ये हमको यूजी में जब पढ़ाया जा रहा है, तो पीजी के लिए जो मॉडर्न पैरामीटर्स है, रिसर्च एक्टिविटीज है, रिसर्च लेबोरेटरीज है, ये सब हमको होना चाहिए। और मुझे थोड़ा सा और एक कहना है कि हम मॉडर्न पैरामीटर को तो साथ में लेते हैं, पर हमारे जो नियमावली है परीक्षा करने की, प्रकृति परीक्षा करने की, उसके बाद व्याधि की जो व्याधि लक्षण समुच्चय जनित तो व्याधि का है, दोष दूसरा समूर्चना का है, तो वो जो मेडिसिन है वो दोष दूसरा समूर्चना को विभक्त कर सकती है क्या, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और हमारा तो एक पूरा रूटीन एक पैरामीटर है, जैसे निदान, हेतु, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति भेद, इस पैरामीटर से हमारी पूरी व्याधि की संप्राप्ति होती है। वैदिक क्षमत्व को भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा माना हुआ है। तो इस तरह से उस मेडिसिन की ये भी पैरामीटर से डिटेल स्टडी हो, तो हमारी जो मेडिसिन है, हमारे आचार्य ने जो लिख के रखा है वो एकदम सही है, हम उसके अपोज में बिल्कुल नहीं जाते। उनको तो हम प्रमाण करते हैं कि उस इतने पुराने साल में भी उन्होंने इतना रिसर्च करके हमको दिया है, पर हमारा कर्तव्य है कि उसी रिसर्च को हम आगे बढ़ाए। गुरुची है तो गुरुची है, तो कल जैसे हमारी बात हुई द्रव्य गुण के विषय में फार्मेसी में, तो उसमें भी यही है कि गुरुची है, अदर द्रव्य गुरुची नहीं है, तो इसका भी रिसर्च हो। और गुरुची के जो भी कार्य है वो हमें दिखाना चाहिए कि ज्वर रगना है तो ज्वर उतरा है, ज्वर के पैरामीटर हमको उनसे लेना है मॉडर्न से। और हमारे भी लक्षण है, हमारे यहाँ तो ज्वर के अलग अलग भी कहा है कि वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, निदान, अग्नि की व्यवस्था सबसे बड़ी तो हमारे यहाँ अग्नि, जठराग्नि, कायाग्नि, धात्वाग्नि जो माना है, तो उसका भी विचार होना चाहिए। मतलब आयुर्वेदिक बेस पकड़ के सपोर्ट इन मॉडर्न का और रिसर्च करें तो हमें, मुझे लगता है कि हम लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी दोनों हमारे आज वक्ताओं को, काफी मेहनत से उन्होंने हमें आज काफी सारा बताया, मुझे सब कुछ रिकॉल हो गया है, तो मैं धन्यवाद आप सबको देना चाहूंगी। और इतना हम लोग करें तो मुझे लगता है कि हमारा जो वेबिनार है उसका कुछ सफल हो सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम साधना जी, आपके इनपुट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों ही बहुत वाइटल पॉइंट्स उठाए, पीजी स्कॉलर्स रिसर्च के लिए लैब की स्थापना, बजट की स्थापना और रिसर्च ऑफिसर की स्थापना, बट एट द सेम टाइम जो आपने बात उठाई वो सही है। यही तो वजह है कि हमारे जो क्लासिकल, हमारे जो शास्त्रोक्त जितने भी फॉर्मुलेशन हैं वो आज भी अनचैलेंज्ड है, और उनके लिए कोई भी किसी प्रकार की लाइसेंसिंग की जरूरत भी नहीं है। वो अपनी ये ठीक है, उनमें जो इंग्रेडिएंट पड़ते हैं स्वाभाविक सी बात है, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं निश्चित रूप से वो तो वैसे ही है, वो नेचुरल है। मॉडर्न वाले केमिकल होते हैं तो वो एक्शन करते हैं। आज कोई आया था, जैसा भी इन्होंने बताया था देवनाथ जी ने, कि अश्वगंधा इज आई मीन बेस्ट बैक्टीरियोसाइडल, तो बैक्टीरियोसाइडल अगर उसमें टेंडेंसी का कोई इंग्रेडिएंट है तो वो काम करेगा ही करेगा। ये अलग बात तो हमारा अश्वगंधा है, और उसके और भी एस्पेक्ट्स हैं, वो माने नर्वाइन टॉनिक एटसेट्रा। तो अभी मैं चूंकि अब मेरे देखते देखते डॉक्टर सीके कटियार साहब भी लीव ले गए हैं, तो मैं 1 मिनट तो दूंगा पहले डॉक्टर राजीव कुरेरे जी को, कि अपना कोई फीडबैक देना चाहें तो ठीक रहेगा। आपने दोनों सुन लिया, और फिर चलते चलाते में हमारे शर्मा शुक्ला साहब हैं, और फिर सीपी शर्मा साहब का आशीर्वचन लेते हैं। तो डॉक्टर कुरेरे जी, आपको कुछ एड ऑन करना है? सर बस आपका ऐसे ही निरंतर आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। वो दूसरा क्षेत्र है, रिसर्च में आशीर्वाद कैसे मिलेगा, वो तो आपका क्षेत्र है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमें अपने आयुर्वेद पे फोकस करना चाहिए, और आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता और एफिकेसी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल दोनों पक्ष एक साथ चलते रहेंगे। जो हमारी संजीवनी बेटी है वो अनचैलेंज है, त्रिभुवन कीर्ति अनचैलेंज है, उसको हम यूज करते रहें, और साथ साथ नए फॉर्मुलेशन बने, अगर ट्रायल में टेस्ट हो जाते हैं तो फिर उनका अपना पेटेंट कराते रहे। आपकी बात सही है। डॉक्टर निशांत शुक्ला जी सर, आप थोड़ा 2 शब्द, आप भी आपका लंबा क्लिनिकल अनुभव है, कैसी औषधियां आपको मिलती हैं,
कितनी शास्त्रोक्त तो कितनी पेटेंट पे आप वर्क करते हैं, थोड़ा बताइएगा। ये समय बिल्कुल भी, मेरे पास हार्डली 2-3 मिनट बचे हैं, 11 बजे के आगे हम नहीं लेना चाहते हैं, हमारा ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है। जी सर। तो शुक्ला साहब नहीं है, तो शर्मा जी फिर तो समापन का दायित्व आपके ऊपर आता है। हमारे एक्स डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सीपी शर्मा साहब, स्वागत है आपका। जी सर, नमो नमः। प्रणाम, नमस्कार। दोनों दोनों आपके जो सर वक्ता नमस्कार। हैं सर, नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। उत्कृष्ट वक्ता हैं। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में जो भी रिसर्च की व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप जो व्यवस्थापन दिया, जी सर। उस व्यवस्थापन में वो लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोगों को अगली रिसर्च इन्हीं आयामों में करना है। परंतु जहां तक आयुर्वेद की बात है, सोमा आयुर्वेद शाश्वतो अनादित्वात् भाव स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् नित्य। हमारा आयुर्वेद शाश्वत है। हमारे चाहे आप किसी ड्रग की, जैसे मैडम अभी कह रही थी अमृत, हेलो जी जी सुन रहे हैं, जी सर। आपके पास आ रही हाँ है। सर। हाँ, जी सर। जैसे अमृता के बारे में कह रही है, अपन अश्वगंध के बारे में कहें, आंवले के बारे में कहें, तो हमारा जो एक्सप्लेन्ड है, लिटरली प्रूफ है, चाहे वो हमारा बृहत त्रयी से सिद्ध हो, चाहे लघु त्रयी से सिद्ध हो, या बाद के पोस्ट रिसर्च से द्वारा सिद्ध है, वो सब यथावत है। कहाँ गलती हो रही है कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वो हमारी मेडिसिनल वैल्यूएबल प्लांट्स की जो एल्कलॉइडिक स्टेटस है उसको चेंज करना है। करेक्ट। तो यहाँ हमको केवल और केवल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेडिसिनल प्लांट्स का जो बोर्ड बना है, उस बोर्ड के माध्यम से अर्जुन कहाँ पैदा करना है, अर्जुन के लिए कैसी सॉइल चाहिए, कैसा पानी चाहिए, तो वो निश्चित हृदय होगा, हृदय के लिए उपयोगी होगा। अश्वगंध की या शतावरी की, तो यहाँ पर रिसर्च हमारे मनीषियों ने, हमारे रिसर्चर जिन्हें कहें आचार्यों ने, कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया। उसके लिए उन्होंने कहा हमारे पास प्रमाणों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकते। चलिए, आज करंट स्टेटस में हमें मॉडर्न पैरामीटर्स के हिसाब से अपने को स्थापित करना है। कई बार मैंने कहा है कि हमारे कई ऐसे नोबल पुरस्कार, यदि उस समय वो नोबल पुरस्कार होते तो नोबल पुरस्कार के, जैसे आचार्य चक्रपाणि दत्त को 2 टीकाएं की उन्होंने, चरक के ऊपर भी की और सुश्रुत के ऊपर भी। चरक चतुरानन की उपाधि मिली, सुश्रुत सहस्रानन की उपाधि मिली। तो जो चरक चतुरानन की उपाधि मिली, चरक चतुरानन, चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी। तो ये दिव्य दृष्टि जो वैशिष्ट था उनका, ये हमारी रिसर्च का प्रतीक है सर। सुश्रुत सहस्रानन, भानुमति टीका की, तो ये हमारे आचार्यों द्वारा नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो उस समय के पैरामीटर थे। मॉडर्न, अब मॉडर्न ने, साइंस ने माइक्रोस्कोप कर लिया, मॉडर्न ने कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी कर ली, कोई बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडी कर ली, परंतु हमारे आयुर्वेद की जब भी कोई भी परीक्षण होता है तो हमारे ड्रग, हमारे सिद्धांत पूर्णतः शाश्वत सिद्धांततः सिद्ध होते हैं। ये हमारा वैशिष्ट है, आयुर्वेद का वैशिष्ट है। तो हमें लिटरली रिसर्च के साथ साथ क्लिनिकल रिसर्च प्लस हम लोग जो भी ज्ञान रखते हैं, आज ऐसे अब मैं गया, माननीय हमारे महामहिम जिलाधीश और
पूर्व कमिश्नर महोदय के, उनको भयंकर बार बार नाक पहुंच रहे थे रूमाल से। हमने 2 बार हमने कि सर एक काढ़ा पिलवा दे, एक दवाई पिलवा दे, आपको चाय पी रहे हैं, वो भी हमें चाय पिला रहे थे, हमने उन्हें त्रिकटू का काढ़ा 2 बार पिलवा दिया, उनकी नाक भी बंद हो गई। वो करे यार ऐसा लग रहा है कि उजेला सा हो गया पूरे शरीर में। तो यार हमारा त्रिकटू, हमारे सारे ड्रग वेल डिक्लेयर्ड है, वहां हमें कहीं भी कोई सोचना नहीं है। अब रही बात आज के पैरामीटर की, चाहे देखिए कैस्ले को मिला क्या नोबेल पुरस्कार, काय पे मिला? रंजक पित्त पे ही तो मिला, वो हमारे भागवत को मिलना था। यदि उस समय नोबेल पुरस्कार की बात होती तो आयुर्वेद के कितने नोबेल पुरस्कार, सुश्रुत को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार, है चरक को मिलना नीचे न्यूरोलॉजी पर। तो हम लोगों की बहुत ही डीपेस्ट स्टडी है किसी भी का आयाम। हमें केवल और केवल अपने आचार्यों के अनुरूप अपने बच्चों को सबसे पहले लिटरली स्ट्रॉन्ग करना है, फिर क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अग्निहोत्री साहब, पवन जी और दोनों वक्ता प्लस हमारी मैडम को मैं नमस्कार। धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे समय दिया और सुना। Thank you very much, sir. Very nice comment, very nice comment. So now I would like to request, बस केवल एक क्या करना है, क्या हुआ? ऐसा क्या करना है, एक बार कैक्स टेम्पो चालू रखिए ना। जी जी, मैं इसीलिए कह रहा था। मैं डॉक्टर सीपी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके आइडियाज के लिए, उनके थैंक्स के लिए, उनके इस इनपुट्स के लिए। और ये बात आपने बहुत पहले भी उठाई थी, जहाँ तो पुरस्कारों वाली बात थी, भारत रत्न से भी ऊपर वो तो विश्व रत्न भी अगर है तो है ही है, आयुर्वेद के लिए वो विश्व रत्न है, हमारे सभी बृहत्त्रयी और लघुत्त्रयी के निर्माता और वो ज्ञानदाता। एक चीज आपने उठाई कि ये सत्य बात है कि हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो औषधियां पहले यहाँ पर उपस्थित थी, आंवला, अश्वगंधा, शतावर जो भी है, और आज भी, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले हम लोगों ने जो अष्टवर्ग पर जो एक वेबिनार की थी, वहां पर ये कॉन्सेप्ट उभर के आया था कि जो वसनाव या जो हमारे विलुप्त पाए प्रजातियां हो रही हैं उनको लाके जो एक डोमेस्टाइजेशन की बात आई थी, तो वो चर्चा हुई। तो हम डोमेस्टाइजेशन करेंगे, हमें वसनाव को यहाँ पर टेक्सास बकाटा को वहां से लेके आएंगे, और तो हम अपने 6000 फीट पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द रूटिंग हैज स्टार्टेड इन दैट वे। 12 to 13,000 feet house are available, and now they are being reposted and their domestication is going on. So वो भी एक बड़ा वैज्ञानिक और बड़ा विजिलेंट और इंटेलिजेंट स्टेप था। तो अगर हम उन किसी का घर छुड़ा दीजिए, किसी का हैबिटेट छुड़ा दिए, तो बच्चा हो, जानवर हो, वो बहुत ज्यादा अनमने रहते हैं, अपसेट रहते हैं। बच्चे अगर ननिहाल में खुश होगा तो ननिहाल से आना नहीं चाहते हैं। बच्चे का स्कूल 8वीं तक पढ़ाई, स्कूल छुड़वाओ तो नाराज होते, नहीं हम तो उसी स्कूल में पढ़ेंगे, वहां मेरे मित्र हैं। तो हमारे इन पौधों की जो भाषा नहीं होती है, बोल नहीं पाते बेचारे, तो इसलिए आपका वो कथन तो सही है कि उसी हमारे बृहत्त्रयी के आधार पर आंवला की जो भूमि और जो एल्टीट्यूड बताया गया, वहां जब वो अगर पैदा हो रहे हैं तो उनकी क्वालिटी, उनके अंदर स्थित उनके रस गुण विपाक की क्षमता, कार्मुकता, वो निश्चित वही बनी रहेगी। आज के पर्टिव लाइफ में ऊपर से हमें 2 किलो के बजाय 200 किलो चाहिए, तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो क्वालिटी डाउन हो ही जानी है। तो वह जो क्वालिटी कंट्रोल खत्म है। तो दोनों विपक्ष हैं तो बहुत मजबूत, लेकिन कंट्रोवर्शियल, अब जैसे आपने रसवाद की आता है, हमें टेस्टिंग तो आज शुरू हुई टॉक्सिकोलॉजी और फोटोस्पेक्ट्रम पर सब पर। वैसे तो खाली वारितर और हमारा ये था कि वो रेखापूरित और निश्चंदीकरण, ये सब चीजें अमृतीकरण था। तो दोनों पैरामीटर्स अगर हम शास्त्रोक्त पे लगाएंगे तो 100-200% सही है। बात बाकी 11 बच्चों के हैं, इसलिए सबका समय कीमती। मैं इसलिए डॉक्टर के लिए मैं संकोच के साथ हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि उनको बुलाऊं, क्योंकि उनकी शिकायत देती है हमको, आप सब लास्ट में बुलाते हैं। आपको दे रहे समय, लेकिन उनको सोने का समय हो जाता है। तो मेरा मन यही है कि आप ही समापन करिए, और पवन जी भी बार बार इशारा कर चुके हैं, तो बताइए कुछ आपको याद आ गया लगता है, बताइए सर। 1 मिनट, हम लोग ग्वालियर के रहने वाले, हमारे मुरैना के पास से खूब जानते हैं जी। चंबल नदी से, चंबल नदी वो उनकी
उनमें जो ऊर्जा देता है, उनकी जो कहते हैं ना कि वो बड़े क्रूर और वैसे होते हैं, वो वहां के जो भी सोल्जर्स होते हैं वो तो मलखान बड़े सिंह को भी देते सक्षम होंगे। होते हैं। तो महाराजा सिंधिया के ग्रैंडफादर, जब वो हमारे गांव का एक सिपाही आता था, वो कहते थे 3 दिन तक वो पूरी किचन का इंचार्ज था, सबको मारता। तो ये पानी का प्रभाव, ये स्थान का प्रभाव है, भूमि का प्रभाव। तो जहां जो जड़ी बूटी पैदा हो रही है सर, वहीं से हमको वहां पर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। वही तो पॉइंट है ना, वही सर पॉइंट। और सर हमारे वहां पर हम ग्वालियर सॉइल में टेस्ट कराएं, वहां के वाटर की टेस्ट कराएं, और उसके बाद फिर उसके इंग्रेडिएंट एल्कलॉइड की टेस्ट कराएं। जी सर। वो हमारे लिए, आयुर्वेद के लिए, भले ही हम कम बनाएं, अम्ल की रसायन बहुत कम बनाएं, पर हमें वो आंवला कहाँ से लेना है? छत्तीसगढ़ से। हमें वो आंवला कहाँ से लेना है? जहां पर ग्राफ्टेड आंवला नहीं। आजमगढ़ से। हाँ सर। राजीव जी आप कुछ कह रहे हैं? सर हमारे पड़ोसी हैं, हम लोग जालौन के हाँ रहने हाँ, वाले हैं। मुरैना आजकल पूरे सौरभ परिवार वही मुरैना में डीओ है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, हमारा स्टूडेंट मुरैना का ही डीओ है। हाँ। ठीक है सर, आप समापन के लिए पवन जी को पुनः एक बार कष्ट देते हैं कि समापन करिए, 11 की मर्यादा पूर्ण हो गई। सर गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट गुड नाइट to Good you night. all. Day after, नमस्कार। namaskar. Day after tomorrow, 2 धन्यवाद सर। webinars. Thank you very much. Good night. Shubh Ratri. शुभ रात्रि सर।